Good morning, everyone. Good morning. Good morning. जो भी doubts है, please do ask. We'll start the streaming in 2 minutes. Good morning, Varun. Good morning, Nilesh. How are you? Long time. How is everyone at home? Short swing is running with 1300. MTSL कहाँ पे रखा? 4120. Okay. किसी को भी कोई doubts नहीं है ना? नहीं नहीं स्मिता मैम रुक जाइए. आपका बताता हूँ. Let's start with the analysis. उसके लिए हमको जाना पड़ेगा फ्राइडे के दिन. राइट. एग्जैक्ट शॉर्ट कहाँ से हुआ था हमारा? यहाँ पे. राइट. सो रीजन ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से चलेंगे. व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड? ओके. ड्रॉप पॉइंट एक्शन मार्केट में. Three things that is majorly looked at. First is volume, right? So let's remove this account and ladies come to 1 hour. In this perspective, market एक range of action में था, correct? When the market was in high range of action, what are the first few things that you have to keep in mind? Allocation point one, 13th ka reversal point of action. Definitely we got a nice retracement point. With the nice retracement point, where was the next high volume predicted? The next high volume was predicted on 14th Asian session, right? So whenever the action plan is generated, do we look for an execution in a direct reversal point? No, it reaches to the nearest point. The nearest point of minimality surplus यहाँ पे थी. उसके साथ market slow and steadily rejection लेना start किया, right? After that, what do you notice? Market was in the iceberg zone. When the market was in iceberg zone, what are the few major things that needs to be kept in mind? Market continuously एक direction में रहेगी, right? Whose point of action may will come to 15 minutes. With 15 minutes, what do we notice? Market started to slow and steadily take the fall, right? So action plan one, rejection, continuity. In this continuity of the break, what are the few major things that needs to be kept in mind? Allocation point. Swing high, swing low, retracement point low, TTS का golden ratio यहाँ पे आता है, right? Few people exited at that point and re-entered again at this range, but
Major concern of not exiting the trade was volume, क्योंकि volume was in the direction point of action. So इस point of action में जब demand allocation ही complete ना हो, क्या आप exit करोगे? नहीं. Always remember to be in the directions with the market, right? How do you look for a directions? Yes, that's right. Second, perfect. Arun. So in this perspective, what are the few major things that needs to be kept in mind and followed on allocating the first come first serve services? So this get into the play with this. Again, we got 100% rejection and break and continue. इसके साथ retracement development आई थी. Retracement development के साथ what do we look for? Again, first come first serve retracement point, which will be taken into the play from the bottom. क्या बॉटम से लेंगे या विक बॉडी से लेंगे रिट्रेसमेंट अलोकेशन? Yes, body secure because it's not a high wick range. So when we took it from the body, 100% rejection, 100% rejection के साथ एक छोटा सा retracement above 50%. तो इस point of action में what do we notice? That is called as minimality M1. Minimality M1 का new allocation point, first come first serve का moment जो plotting में आती है, that allocation on the retracement break, 150 first target, 200 second target. राइट. सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमारे को 150 से रिजेक्शन दिखने को मिली थी. रिजेक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन में फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट विल एक्ट एज आवर allocation. Again, body break and continue, 200% rejection, right? With the 200% rejection, did the market sustain or did the volume change? No. When there is no volume change nor the market has showcased a break of 200% of supply, what do we do in the next point of action? The next point of action is to allocate a directional moment, right? Where does that play starts from? From the first come first serve, high wick range? No, we'll take it from the body. Break and continue. On the break and continue, 200% is the range drop. कीपिंग इन माइंड हमारे पास एक चीज जो मेजरली है, 200% कंप्लीशन नहीं हुआ है. करेक्ट. जब 200% कंप्लीशन नहीं हुआ है एंड यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन दिखा रहा है 200% से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अलॉट करके हमेशा साथ में लेके चलना होता है विद द मिनिमलिटी. हाई विक रेंज है तो विद द विक 100% ब्रेक एंड कंटिन्यू, 200% रिजेक्शन. जैसे ही 200% रिजेक्शन डेवलपमेंट यहाँ पे दिखने को मिली, व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? मार्केट टेंड टू break the 200% minimality range. जैसे ही 200% minimality range break किया, do we have a placement at first come first serve? No. जब placement नहीं है first come first serve का, क्या next plan of action को लेके चलना होता है हमें? Surplus movement on the break of 200. So surplus allocation कहाँ से आएगा? From here till 150% point. This will act as our surplus. Surplus rejection का top point से allocation. Break and continue. First target हमेशा 100% होता है, then 200. Right? In this perspective, 200% minimality completed. Retracement point of action allocation देखना है क्योंकि high volume तभी भी नहीं आई थी. तो first come first serve में कौन सा volume allot होगा? This is the volume. So this volume will replay at this point. What do we notice? 100% rejection. With the 100% rejection, continuity in the moment. So अभी surplus minimality जब 200% complete हुआ है, what is the next step which will be taken into the play? First come first serve demand, reallotting the point. So structure 1, 100% break and continue. उसके साथ screening के हिसाब से 4 hours का 150% भी यहाँ पे था, तो doubling the point. Right? So 150% of 4 hours and 150% of 15 minutes, both are matching. Now comes the real game of action of applying the retracement point, right? 15 minutes का allocation ये लो या ये लो या ये लो, यहाँ तक ही आएगी.
तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में व्हाट आर द टू मेजर थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो? ओके, कम टू 1 आवर। 1 आवर में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहाँ पे है? 1 आवर में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस पॉइंट ऑफ एक्शन, इसे भी हम नीचे से अलॉट करेंगे। व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ 200% अलॉटमेंट विच इज बीन इन द डायरेक्शन, right? Break and continue में है। Do we have a retracement? No. So when we don't have a retracement, what is the next plan of action? Second serve। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में हमारे पास सप्लाई है ही नहीं अलॉट करने के लिए, right? So in this point, this will act as our second serving on break of 1 hour first serve. Now what do we notice? We have a 200% rejection. When we have a 200% rejection point, what do? We look for an allotment rejection जो कि exactly intact point of action से develop हुआ है। With the exact rejection, we allot the first come first serve demands. Why is that taken into the play? Because now we have an allocation for demand play. कहाँ से start करोगे? अगर न्यू भी हो, बिगिनर हो, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये अलॉट होगा। Experience more than few will this play the role, right? So rejection 1 100% से हुआ है। Second allocation 100% break and continue में double 150% rejection 150% rejection के साथ first come first serve का supply ये वाला होगा, right? So when this get into the play, what do we notice? High wick range है, so wick से लेंगे 100% break and continue 150% rejection, right? With this, what are the next few steps that needs to be taken under the consideration at the current play, right? The new allocation point. The new allocation point is this. मार्केट में कैंडल छोटा है करके मत जाओ। एक कैंडल जो छोटा है करके जो सोच रहे हो ना, वो एंटायर मोमेंट इज ऑफ 400 पिप्स। ओके, सो क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ फॉर द अलोकेशंस। अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा रखता हूँ, राइट? So उसके साथ what does the first come first serve act? This will be our first come first serve, which will be placed with the high wick range and 100% break, right? So allocation जब same range of motion में दिख रहा है and it's not given a break, what do? We allocate a newer structure to identify the point. इसका नीचे ब्रेक नहीं हुआ था फ्राइडे के दिन, आज का दिन मार्केट ने क्या किया? This will act as your retracement allocation 1 plotted 100% break and continue. When 100% break and continued of normal thing is a supply allocation. When a supply allocation is taken under the play, 150% is the first rejection point. With the first rejection point, market tend to take a break and sustaining in the same zone, right? जब यहाँ पे sustain हुआ, first retracement कहाँ पे है? Retracement, do we have a change in character in both of the sides? No. So at the point, this will play a role 1, 2, right? Again, market took a rejection. With the rejection point comes the retracement, intact level not completed. So first come first serve supply, which will act in the play to allot 1, right? So with this break and continue 2, 150% rejection, intact level rejection. With the intact level rejection, continue in the drop. When the continue in the drop comes into the play, first come first serve demand, which will be taken under the consideration from the top, break and continue,
150% rejection. With the 150% rejection and 200% break and not sustained, so we'll be taking the new mapping, which is यहाँ से यहाँ तक and stabilize the location point. One comes to the play, right? So with this, what do we notice? Market has not breaked and sustained. Hence, the demand is only 100%. अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एस टू बी वन के साथ मार्केट रीडेवलपमेंट में जा रहा है to hunt out all the retailers who had been sat in this position in the morning. So what should be the plan of action? The nearest intact level and nearest LG points is to be identified. Do we have the high volume in 1 hour to take a replacement? Yes, definitely we have a high volume in today's thing. So we can look for one retracement point of action till the nearest LG point or the intact level with the setup. Okay, any doubts in this formation, guys? Please do ask. Good morning, Arya. How are you? I'm good, sir. So many things happen now. Things are normalizing slow and steady. Great. Happy to hear that. Anyone has any doubts, please do ask. Don't hesitate in asking the doubts. नहीं नहीं अरुंधति मैम बने रहो. Good morning, Rakesh. How are you? Perfect buying. Please explain how to identify LG point. जहाँ पे wick नहीं होती है उस डायरेक्शन से allocation पे अलॉट करना, right? Good morning, Usman. On the bullish movement, candle with no wick on the bottom will be considered as LG point for bullish scenarios. Bearish scenarios, जब top point of action से wick create नहीं है for that action plan. अगर ये buying allocation देखना है ना, go for Thursday or Friday के दिन we had placed an allotment over here and sat quietly for an moment strip out. अगर MCX में short करना है, first point of action is 123783. On the break of 124272, the targets will be 125,646. 4 points up. Okay. No, I'm totally okay with that. Right movement, right allocations के साथ ही बने रहना सभी लोग. Good morning, सुरेश जी. कैसे हो? अभिषेक आपका एनालिसिस शेयर किया है. Beautiful, sir. Keep it up. Sir, can you please show how to analyze Friday volume? I was in the wrong direction somehow and couldn't catch the drop. There is nothing to analyze. It's all about the patience game. Till the time you guys are showcasing the patience, you will be able to identify the right directions and be in the right
point. So entering in a right point. My bad. Ninety pips running in the ID, sir. Okay. ID trades. How do you look for an allocations? अगस्त्य MTSL तो लगा हुआ है सिस्टम. I am totally okay with that. See, जब allocation direction में हो ना आपका फैजा, एंट्री परफेक्ट है आपकी, बट 1000 पॉइंट के लिए क्यों मारा मारी कर रहे हो जब मार्केट कंटिन्यूअसली 5000 6000 पॉइंट ड्रॉप दिखा रहा है, राइट? एग्जीक्यूशन परफेक्ट, एंट्री परफेक्ट, थ्री विंग के साथ आपका एंट्री यहाँ पे हुई है, राइट? सो हजार पॉइंट के लिए मारा मारी मत करो, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट, right allocations, right perspective, right movement. So in this action plan, what is the one major thing that you'll be doing? ये अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, 91,200 में रिजेक्शन है, राइट? आप यहाँ से ही एड ऑन करके बीच बीच में एड ऑन कर रहे हो, हंट आउट हो जाओगे, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज टू प्रोटेक्ट द कैपिटल. फॉलो द MTSL, बी इन द डायरेक्शन, रिजेक्शन दिखाएगा, रीडेवलपमेंट में आएगी सेटअप, देन यू लुक फॉर एन एड ऑन. Without that, why are you looking for an execution? Sir, what are the changes for this quarter? MC1. This quarter is MC2, POI, minimality M1, minimality M2. M3 is not there. Okay. And circulating supply again quarter 1. Q1 में आएगा. And M3 Q1 में आएगा. And MC1 Q1 में आएगा. Rest all is still the same. Okay, Nilesh? Streaming will be there for next 15 minutes. जो भी doubts है, please do ask.
Sir, three wing setup. What about it, Arya? Yes, that's right, Nilesh. When we say high wick range, what does that mean? Wick bigger than the candle body? Yes. बॉडी से बड़ा विक होना चाहिए. आपने कहा था ना आप मंडे को एक्सप्लेन करोगे थ्री विंग. चलो यार, आई गिव यू वन सेटअप ऑफ थ्री विंग. जहां पे भी आपको मार्केट में थ्री विंग दिख रहा है, मतलब थ्री विक्स, विक वन, विक टू, विक थ्री, राइट. आप लोग एस टू पी वन वैसे भी फॉलो कर रहे हो, राइट. थ्री विंग सेटअप में तीनों विक ही होना चाहिए, बॉडी छोटा होना चाहिए. फोर्थ कैंडल जब इंटैक्ट होगा, एग्जीक्यूशन पे आएगा, राइट. टारगेट्स विल बी टिल टीटीएस 2.0 or nearest minimality or supply and demand. Same for a bearish scenario. Whenever the market is in top range, this is only setup one I am saying about. There are three types of setup. One is good enough for you guys. एक वीक टॉप से आया, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक. थ्री वीक जब क्लोजर होता है, this is called as three wing. Doesn't matter, wick is very much important. फोर्थ कैंडल जब इंटैक्ट होके कंटिन्यूटी में आती है, एग्जीक्यूशन होता है. Scenarios of looking into the trades with that. Okay, sorry, those setup to one wick, two wick, three wick, right? Same formation, one wick, two wick, three wick. Again for the bottom setup to one, two, three, drop, right? So always look in perspective of allocations where there is with the high volume. So हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी रिजेक्शन पॉइंट नजदीक हो तभी ही देखना, उससे पहले नहीं. अगर बीच में एग्जांपल लो, ये आपका सप्लाई है, राइट. मार्केट यहाँ पे थ्री विंग क्रिएट किया एंड मार्केट ऊपर गया, राइट. ट्रैप करके नीचे आएगा, डिमांड कंप्लीट करेगा 200%, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेटअप क्रिएट करेगा, देन इट विल कंटिन्यू द रैली, राइट. So same scenario with a bearish movement as well. Whenever there is a proper demand on the completion of supply, मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है, इस मूवमेंट में कहीं पे भी आपको थ्री विंग बीच में से मिल गई, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट फर्स्ट आपको हंट करेगा 200% कंप्लीट या 150% कंप्लीट करके यहाँ पे सेटअप फॉर्म करके ड्रॉप दिखाए. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट काइंड ऑफ allocations. Follow setup one, that's more than enough at the current point.
Okay. सर आपकी आवाज चली गई। हेलो हेलो, आ रही है? कुछ फॉलो करो या ना करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स में बने रहो, डेफिनेटली यू विल गेट टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एक्शन फॉर एग्जीक्यूशन, राइट? हरी में मत रहना, उतना ही। First masters S2B1 setups fully, then come to 3-wing setup, not prior to that. Okay. Any other doubts, guys? Sir, in volume also, if wick is bigger than the body, then it move in the direction of the wick generation after the rejection. After the rejection, not prior to that. Okay. कभी कभार वॉल्यूम में जब रिजेक्शन दिखाता है ना, वो कैंडल में भी आपको विक बड़ा दिखेगा। अगर नियरेस्ट पॉइंट में सप्लाई या डिमांड फॉर्मेशन में है, तो डेफिनेटली वो भी हंट करेगा पहला, उसके बाद ही मूवमेंट डेवलपमेंट में दिखेगा। So it's just not about which direction the rejection in the volume has been showcased, it's about which point the market has tend to take the rejection from। अगर हाई वॉल्यूम के साथ हाई विक क्रिएट हुआ है,
एंड नीचे मिनिमलिटी या सरप्लस या सप्लाई या टीटीएस 2.0 पेंडिंग है, डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगा, हंट करेगा, उसके बाद ही मूवमेंट डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है। नहीं नहीं, हेजिटेशन हेजिटेशन में मत रहो। नुकसान हुआ है। Don't repeat the same mistake. You will be having three opportunities to repeat. But एक ही दिन में सेम मिस्टेक 3 बार रिपीट करोगे, देन व्हाट्स इट वर्थ? महीने में 3 बार रिपीट करो, प्रॉब्लम नहीं है। बट आप बोलोगे कि लाइक नहीं नहीं, अभी ये हुआ है, मैं फिर से एक बार सेम चीज कोशिश करूंगा, राइट? उसके साथ मार्केट आपको फिर से कैपिटल उड़ाएगा, उसके बाद फिर से आप सेम मिस्टेक रिपीट करोगे, फिर से आप सेम करोगे, फिर से कैपिटल उड़ाएगा, देन जाके आपको समझ में आएगी कि ओ, आई हैव डन इट रॉन्ग। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल ऑलवेज। गुड मॉर्निंग श्रेयस। एक्यूरेसी। मेंबर्स बता देंगे। Sir, where did you exit the previous long swing trade and why?
लॉन्ग ट्रेड अभी तक मेरा क्लोज नहीं है, चल रहा है। सर आपकी एक्यूरेसी कितना है? श्रेयस मेंबर्स खुद बता रहे हैं ना ऊपर, तो फिर से मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बता दो यार आप ही लोग। सिर्फ 70% क्लोज हुआ है यार, 30% इज स्टिल रनिंग। डेली टाइम फ्रेम पे चेक करना, यू विल कम टू नो व्हाई आर्य। फर्स्ट बैच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है डॉलर्स इनटू द मार्केट in 56 trillion dollars of printing. Only 7.6 trillion dollars worth of money is out. Yet to develop. Let's see how will it go. 3,987 पे the remaining 30% out है हमारा। उसके ऊपर जब तक है swing trade will be in the directions. No plan of exiting at the current stage. Okay. 4 hours में S2B1 बनेगा, तभी ही मैं शॉर्ट एग्जिट करूंगा, वरना दोनों तरफ से हेजिंग में ही रहेगा। One is running with 7,856 pips. Short is running with 2,300 and 1,500. दो ट्रेड है शॉर्ट का। 1,500 इज फ्राइडे ट्रेड, जो ग्रुप में भी शेयर किया था ना, ये वाला। आईडी में लिया है? यस लिया है ना। आईडी ट्रेड एंटर्ड एट 4102.3, क्योंकि 1 आवर में हाई स्पाइक नहीं है अभी तक वॉल्यूम। एक और बार ऊपर जाके बाद में नीचे आएगा, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एलजी है, विक क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है।
आपको पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं. रीजन, it's actually very inspiring. 30 pips 40 pips का जमाना गया जनाब. So whichever strategy, whichever rules, whichever formulations you guys are following doesn't matter for me. Only one thing it matters for me is do 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, then come with a smaller capital, develop that capital, compound it. While compounding, follow a risk to reward. How could you follow a risk to reward when you're not in a fear, greed, or a FOMO stage? How can you improve your fear, greed, and FOMO? Is when you follow a proper calm mind state. That can be done through meditating, that can be done through yoga, that can be done through reading books. We follow a rule of Asian session 20 pips, London, New York session of 40 pips. With that, protect your capital, execute the trades only with the setups. Don't execute it with running or greed execution. Greed execution is good when you're in the right direction to allot the right moment, not prior to that. ओके, सो प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट कीजिए, डायरेक्शन में रहिए. मिलते हैं अगली सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. नितेश साइनिंग ऑफ.